Good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to my class, basically. So, कैसे आप सब all so your parents are with you. So, say hello from my side only. So, basically, आज की class हम start करेंगे. My today topic is the body fluid and circulation for class 11, basically. So, okay. So first we start with my introduction. My name is Karshita. I am from basically a daily. I done my graduation from ICNU University, and I done BSc General from there. And I also done BSc Cardiology from Jami Hamdan University, basically. So, and I have met many NEET student also, many class 9, 10, 11, 12 student. Okay, and and basically I also learned the year 10 student of NEET. Okay, start the class without any delay. So firstly, आप सबके you should on the cameras basically. आपकी सब कैमरा ऑन होनी चाहिए. तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास को बिना किसी डिले के. ओके, तो क्लास का सबसे पहले थ्री रूल्स आर देयर. फर्स्ट रूल इज दे be interactive with me, and also your camera should be on, and you have to be interactive with me from all the class. And at the last of the class, we have through the questions and through some tips for you, basically, guys, to start the chapter without any delay. So chapter name is the body fluid and the circulation. Okay, so chapter name is, what is chapter name? Chapter name is the body fluid and the circulation. Okay, you always heard. Okay, you always about heard body fluid and circulation. You know what body में कितने सारे टाइप की चीजें होती, like the digestive system, excretory system. So very many systems in their your body, basically. So we start today. The first body fluid circulation. The first we I have and what the blood. What is blood? Blood. What is blood? Blood is a connective tissue which composed of fluid matrix, plasma, and the some formed elements. See, so that is formed elements. Okay. What is connective tissue? The tissue which connect all the things. Okay. So what is the blood? If we divide blood is a connective tissue which is composed of fluid matter, plasma, and foam element. So now we try to now we try to learn about the plasma. Okay. So what is plasma? Plasma is a straw colored and viscous fluid. What is straw colored and viscous fluid? ओके, प्लाज्मा कंसिस्ट अबाउट 55% ऑफ ब्लड. तो प्लाज्मा को जो कलर है वो कैसा है? सो कलर्ड है. और उसका विस्कस फ्लूइड होता है, वो कंसिस्ट करते हैं 55% ऑफ द ब्लड उसके अंदर कंसिस्ट होता है. ठीक है. सेकंड इज अबाउट about 90% of the plasma in water and about 6% to 8% composed 55% of blood से मिलकर बना है. 90% जो प्लाज्मा है वाटर से मिलकर बना है. 6 से 8% कंपोज कुछ विटामिन से, मिनरल से, प्रोटीन से इसके अंदर. यहाँ पे 6 to 8% प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन हर बार आया. Now major plasma, which are proteins there in blood, basically major plasma proteins are like fibrinogen, globulins, and albumins. Okay, there are three plasma proteins are fibrinogen, globulins, and albumins. So what is fibrinogen? Fibrinogen plays important role in blood coagulation. They have to coagulate the blood, help in the coagulation, blood coagulate. Whereas globulins are mainly involved in defense mechanism. ठीक है. डिफेंस करता है कि अगर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ एंटर हो गया है तो उसको एग्जिट कराना, क्योंकि बेसिकली अगर उससे आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां से क्या करता है, उसको निकालने का ट्राई करता है. ठीक है. इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं हम. ठीक है. तो अगर जब हम छोटे होते हैं ना, अगर वी आर स्मॉल चिल्ड्रन, तो हमारे जो फैमिली होते हैं, हमें क्या कहते हैं कि यू शुड मेड अ गुड फ्रेंड. सो बेसिकली गुड फ्रेंड्स वाले लोग क्यों कहते हैं? और जो बुरे फ्रेंड्स होते हैं उसको हमारी फैमिली कहती है कि वी हैव टू एग्जिट देम. कहती है ना? क्यों कहती है ऐसा? ये सबसे बड़ा रीजन है. एंड जो एल्बुमिन है क्या करता है? हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस. फिब्रिनोजन हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, whereas globulins are mainly involved in only defense mechanism, and albumins help in osmotic balance. Small minerals होते हैं, like minerals, which minerals are present in Na पे? Sodium, calcium, magnesium, hydrogen chloride, chlorine, etc. There are small amount of minerals which are present in plasma. Next, we talk about, okay,
Okay. Now we talk what is foam element in there. The foam element consists of 45% of blood in the earth. ठीक है. तो जो भी है तुम्हारे, ओके अब नाउ 45% ब्लर होता है उसके अंदर, बाकी तीन चीजें कौन कौन सी? आरबीसी होता है, ठीक है. इसके अलावा तुम्हारा डब्ल्यूबीसी होता है. एंड इसके अलावा इनके बारे में एक एक करके पढ़े, वन बाय वन विल टॉक अबाउट दैट. स्टार्ट करते हैं विद द आरबीसी, विच, ओके. Okay, now we start with the erythrocytes. Okay, now we starting to talk about. Now we start with erythrocyte. Okay, so what is erythrocyte basically? Okay, so what is erythrocyte? Yeah. So erythrocyte is also known as the RBC. What is mean by RBC? RBC is a red blood cell which are present in the blood. ये कहाँ present होते हैं? Blood के में present होते हैं. हम जानेंगे why the color of the blood is red, because due to presence of what's present, what present, due to the presence of the hemoglobin in your blood. Okay, so what is erythrocyte or blood cell? RBC are the most abundant cell. What is the RBC? RBC are the most abundant cell in the blood. Okay, there is an abundant cell in the blood. Second, in a healthy adult, if we talk about a healthy adult, about 5 million to 5.5 million RBC are present. What are numbers? 5 million to 5.5 million RBC are present per cubic millimeter of the blood. Okay, so how much in healthy adults? 5 million to 5.5 million RBCs are present. Okay, then third point is about RBCs are the formed in the red bone marrow. RBCs formed in the red bone marrow. In most of the mammals, न्यूक्लियस इज एब्सेंट. मैमल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. आरबीसी का शेप की बात करें, व्हाट इज द शेप ऑफ द आरबीसी? आरबीसी आर द बायोकनकेव इन शेप. The red color is because of an iron containing iron complex which is known as the hemoglobin. I will start talking about that. In a healthy, but how much? 100 ml of blood कितना hemoglobin होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम. कितना होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम. एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी कितनी होती है? 120 दिन बाद क्या होती है? तुम्हारी आरबीसी स्पीड में चली जाती है, रिसाइकल बीम में चली जाती है. ठीक है. फाइनल चीज जो मैं पता होना, आरबीसी तो फाइनल डिस्ट्रॉय स्प्लीन. 120 डेज बाद क्या होगा? आरबीसी जो है स्प्लीन के अंदर चली जाएगी. एंड व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन इज द ग्रे यार्ड ऑफ द आरबीसी. इट इज अ लकड़ डस्ट बिन रिसाइकल बिन बैंच which known as the spleen. And RBCs play important role in the significant role in the transport of the respiratory gases. Now, second, okay, now, okay, now we talk about leukocytes. Okay, so leukocyte is known as the WBC. What is leukocyte known as? Leukocyte is known as the WBC here. Okay, so leukocyte is known as WBC. WBC known as the white blood cell. Okay, you know. अब ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबी से न्यूक्लियोटाइड आर रिलेटिव इन नंबर इन आरबीसी थोड़े लेस होते हैं फ्रॉम विच आरबीसी से थोड़ा कैसे होते हैं? लेस होते हैं. आरबीसी थोड़ा कैसे होते हैं? लेस होते हैं. ठीक है. इन एन हेल्थी एडल्ट अबाउट 6 कितनी आरबीसी होती है? 6000 to 8000 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. ल्यूकोसाइट की लाइफ केस जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं. टू मेन कैटेगरीज होते हैं जिसमें बात करें, ग्रैनुलर्स और granules. Granules होते हैं there when is granules are present known as the granules, where the absence of granules then known as agranules. Okay. Example, this is example lymphocytes and the monocytes. So what is neutrophils? Neutrophils are the most abundant cell among WBC and comprise about 60 to 65%. Okay. Then we talk about monocyte. Monocyte comprise 6 to 8% of RBC.
Neutrophils are monocytes of phagocytic cell. What is basophil? Basophil secrete histamine, serotonin, heparin. They are involved in inflammatory reaction. They are involved in inflammatory reaction. And eosinophil comprise 2 or 3% of WBCs. These infection also so bit. So we get our RBC, WBC. If we have any doubt, we can talk. Like if there is a student who's asking me about the what is the lifespan of the WBC. तो मेंशन नहीं है देयर नो मेंशन ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ द WBC बट वी जस्ट रेसिप्रोकेट इन आवर माइंड इट इज शॉर्ट लिव ज्यादा नहीं होता इन आरबीसी लाइफ स्पैन कितना 120 दिन का है यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कितने दिन का है ठीक है तो दैट्स व्हाई नाइस तो ऐसी क्लास को इंटरेक्टिव रखना है प्लीज डू इंटरेक्टिव द क्लास now we can now so before ending any lecture there's to मैंने कहा था class के end में we have to do some questions for the revision so we do there two question which is revision plus from starting we have to talk about हमने यहाँ पे आज क्या पढ़ा हमने बड़े ब्लड हमें आना चाहिए क्लास की लास्ट तक क्या आ गया ब्लड पता हो गया हमें आरबीसी क्या होती है पता चल गया डब्ल्यूबीसी क्या होती है पता चल गया और प्लेटलेट्स क्या होती है हमें वो पता चल चुका है सब कुछ पता चल चुका है आज क्या क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो हम करेंगे करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है बस ऑफ द ब्लड सेल प्लेस इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट जो होती है ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है सेकंड क्वेश्चन बताएंगे सीरम डिफरेंट ब्लड इट लैक्स क्या नहीं होता कि क्लोथिंग फैक्टर नहीं होता है उसके अंदर टू क्वेश्चन हो कि क्यों भी रह सो before ending my lecture I have to say thank you to coming my class and being it so interactive and I'm very happy you stay blessed always and you do learning and whatever you learn from my class it's remain in your minds every time anywhere if you have any doubt about regarding how to success in exam how to do revision and how to get good marks I will take that lecture also. If you have any doubt, feel free to ask me anytime, everywhere, anytime. Okay. So and please rate my class, which a good, bad, better. Okay. Thank you for coming in class. Bye bye. Bye bye class. Bye bye. Bye class. Bye. Thank you for coming in class and please rate this also because your rating make us very good, feel good basically. Bye bye.